This is exercise 7A and the topic is ratio and rate. And right now we are working with question number 1. It is simplify each of the following ratios. And the first part of the question set here is 1.5 kg and 350 grams. First of all, you have to make their units same. To convert kg into grams, we'll multiply with 1000. So both of the units will become same. And you know, when you multiply it with 1000, we will move decimal 3 places from left to right. And it will come here, but there is no need to put this decimal after the zeros. It is of no importance. So it is the ratio between 1500 and 350. Now divide both of the sides by 10. It seems from the question these two are multiple of 10. दोनों ही 10 से डिवाइड होते हैं. It comes 150 and 35. अब ये दोनों नंबर्स आपने इन दोनों नंबर्स को सेम टेबल से डिवाइड कर देना. तो 5 3s are 15, 5 7 times 35. And this was the first question. Now we'll be working with B part of the question. This is little bit different question. For B part of the question, we have two fractions. So B part says this is, and we're writing this is B part of the question. What B part says, this is 15 divided by 24 and 9 divided by 7. You can reduce the same fraction here. First you can reduce it, like 15 and 24 both come in 3's table. You can reduce it with 3. So it becomes 5 by 8 ratio 9 by 7. Now make the denominator same. To make the denominator same, we'll take the LCM of 7 and 8. LCM of 7 and 8 comes 56. So LCM of 7 and 8 will be multiplied on both sides. And finally, you come with 35 ratio 72. Now just look at these two numbers. Are these divisible by any other number or not? These two numbers does not come in any table, both of these numbers. तो you will stop here. अगर ये दोनों एक ही टेबल में आएंगे फिर आप कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. Now we'll be talking about C part of the question, that is of decimals. Like it is 0.45 and what C part of the question says, this is 0.45 ratio 0.85. Just look at the question. These two numbers decimals position is the same one. तो आप इसको सिंपली भी 45 रेशो 85 लिख सकते हैं. अदरवाइज अगर आप इसका डेसिमल ओमिट करें तो दोनों के डिनोमिनेटर में 100 आता है और 100 और 100 का एलसीएम भी आपके पास 100 आ गया. फिर आपने 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू फाइनली ऑब्टेन 45 एंड 85. आपने पॉइंट को ओमिट किया, 100 आया. पॉइंट को ओमिट किया, यहाँ पे भी 100 आया. एलसीएम लिया 100 और 100 का. एलसीएम ऑफ 100 and 100 सेम नंबर्स का एलसीएम वही आ जाता है. तो अब आपके पास आ गया 45 रेशो 85. अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 5 के टेबल से एंड योर फाइनल आंसर कम्स 9 रेशो 17. So this was very much simple question. Now we'll be talking about its D part. What D part says, this is even very much easy. It is 580 milliliter ratio
This is the ratio between three numbers, liters, then 104 milliliter. First of all you will convert liter into milliliter. बाकी आपकी दोनों रेशियोज जो हैं वो सेम रहेंगी. This is 104 milliliter and this also comes in milliliter. This is 580 milliliter. अब आपने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. यू विल मूव योर डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 3 प्लेसेस के बाद आपने पॉइंट लगाना है. तो ये अब आपके पास ये बन गया. इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से है कि अगर आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आपने 3 प्लेसेस पे इसको शिफ्ट करना है. अब आपके पास 2 प्लेसेस तो हैं. वन प्लेस इज ऑन द नंबर 1, सेकेंड आपकी ये कवर अप हो गई और थर्ड नंबर पे आपके पास कोई डिजिट नहीं है, तो वहाँ आपने 0 लगा के फिर पॉइंट लगाने. यानी कि अब आपके पास ये वाला नंबर आ गया. बट हम ये डेसिमल जो है वो अगर आपके पास नंबर में एंड पे 0 हो तो उसके बाद प्लेस नहीं करेंगे. सो यू विल राइट इट 1120 and the third ratio given here is 104 milliliter and this is 580. 3 of the units are same, no need to write unit every time. अब आप इसको reduce कर दें and 3 of these are even number, तो आप इसको simply 2 से divide करें. to 5 times, then again with 2, then again with not with 3, not with 2 and not with 4. So this would be the final answer because 3 of these digit does not come in the same table, so it would be the final answer. Now I'll be working with the E part of the question. What E part says, this is again with the ratio ones, also the fraction ones as well. This is 3/2. जब आपका क्वेश्चन रेशियोज में हो और विद द फ्रैक्शन फॉर्म, तो आपने क्या करना है, इनके एलसीएम यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. तो आपने 8 का, 2 का और 3 का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के लिए आप देखेंगे कि इनमें से 2 नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं. तो अब आपका एलसीएम जो है, अब आप एलसीएम के लिए इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 times 4 times 3, एलसीएम आपका 24 आ गया. अब जो आपका एलसीएम आया उससे आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है. इसको मल्टीप्लाई किया, देन विद दिस वन, देन विद द थर्ड फ्रैक्शन एज वेल. सो अब आपके पास यहाँ से 8 16 आ गया and it would be 36 and it would be 15 and 3 of these number does not come in the same table. अगर ये सेम टेबल में आए तो फिर आपको रिड्यूस करना है, अदरवाइज दिस वुड बी योर फाइनल आंसर. और ये तीनों नंबर्स किसी सेम टेबल में नहीं है, तो यू विल स्टॉप हियर. Now we'll be working with F part of the question. What F part says actually, this is of decimals now. This is 0.33 ratio 0.63 ratio 1.8. अब आप इनके डेसिमल पोजीशंस डिफरेंट हैं. इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसमें 2 प्लेसेस हैं और इसमें 1 प्लेस है. तो आप सिंपली इनके डेसिमल ओमिट करें. और जब डेसिमल ओमिट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 100 और इसके डिनोमिनेटर में होपफुली यू नो हाउ टू ओमिट द डेसिमल. अब उसके बाद 10 और 100 का आप ले लें एलसीएम, क्योंकि अब आपको इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. तो 5 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, देन 2 ऑल्सो. तो अब आपने इनको सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना एलसीएम के लिए. तो अब आपके पास 100 इसका एलसीएम आ गया. 10 और 100 का एलसीएम यू कैन इवन रिमेंबर इट. एलसीएम ऑफ 10 and 100 comes 100. No need to calculate it every time. You can even keep it in mind
LCM of 10 and 100 is 100. तो अब आपने इस LCM से मल्टीप्लाई करना है हर फ्रैक्शन को. You can write it on the right side or left one. तो ये तो रिड्यूस हो गया कम्प्लीटली, ये भी. और यहाँ से अब आपके पास 180. दिस वुड बी रेशो. यू विल नॉट रिप्लेस इट विद इक्वल टू साइन. अब चेक करें ये तीनों टेबल, तीनों नंबर 2 3 के टेबल में आ रहे हैं. नाउ दिस वुड बी योर फाइनल आंसर बिकॉज moreover this question does not, 3 of these number does not come in the same table. So this was all about question number 1. Please do subscribe the channel so that many of the students can see the content. That's it. This was all about question number 1.